going to sing a song with which I began my journey in Bollywood as a singer and composer. A song called Sajna Abhiya, जो लोग आज तक इस पे reels बनाते हैं and they make so many, I would say, cover versions of the song that I'm always so flattered. ठीक है. I also love it. Thank you. So here is Sajna Abhiya for Larra, especially for Larra. Thank you. Sajna Abhiya, Sajna Abhiya, नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, आए नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, सजना अभिया, सजना आहिया. बिंदिया मेहंदी कंगना चूड़ी झूमर गहना, प्यासे प्यासे नैना सुने पड़े तेरे बिना. बिंदिया मेहंदी कंगना चूड़ी झूमर गहना, प्यासे प्यासे नैना सुने पड़े तेरे बिना. नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, आए नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, सजना आबिया, सजना आबिया. वाह, आवाज इतनी खूबसूरत हो तो शो की शुरुआत इससे अच्छी और क्या हो सकती है. सो गेट रेडी टू ड्राइव थ्रू लाइफ विथ योर कोच एंड मेंटर लारा शाह. तो ड्राइव थ्रू विद लारा शाह, योर कोच एंड मेंटर. तुम्हारा म्यूजिक किसी और के म्यूजिक की गूंज नहीं होनी चाहिए, अपना खुद का होना चाहिए. और हमारे साथ जो है ये एक बेहतरीन कंपोजर है, बहुत अच्छी गायिका है. Her live performances are loved by one and all. And you guys are so lucky कि आपको live performance आज मिल सकती है. So stay tuned and stick with us. But presenting to you, the one and only Shibani Kashyap. Thank you, Larra. Oh my God, your voice. Thank you so much, and I think this is such a cool trippy interview. I would say, like, I've never done an interview like this ever. Driving through the streets of Mumbai, and wow, this is fun. आपकी जो कंपोजिशन है या आप कंपोज करते हैं, टेल अस मोर अबाउट इट. क्योंकि ज़्यादातर वेरी फ्यू विमेन कंपोजर्स के बारे में मैंने सुना है, एंड यू आर वन ऑफ द फ्यू हु हैज एक्चुअली डन सम ग्रेट कॉम्पोजिशंस. Thank you so much. है ना? Thank you. तो कैसे शुरू हुआ कंपोजिंग? और इट वाज जस्ट अ नेचुरल थिंग एंड यू डिड वन थिंग आफ्टर द अदर? कैसे हुआ? I don't know, it just came to me very naturally. जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने स्टार्ट करी थी जिंगल्स गा के. पता नहीं आप सबने FM का जो एक बहुत फेमस सिग्नेचर ट्यून है वो सुना है कि नहीं? You've got the music coming night and day. FM is ready for you in the morning or late at night. Whoa, you gotta let the music play. EIR FM stereo. तो ये वाला जब FM स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो वो लिटरली मेरी आवाज़ के साथ, इस सिग्नेचर ट्यून के साथ स्टार्ट हुआ. और मैंने अपनी म्यूजिकल करियर की शुरुआत की by singing jingles like this for radio and television. तो मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के लिए गाया, बट किसी को पता नहीं था कि आवाज़ किसकी है. एंड ऑफ कोर्स मैं कॉलेज के टाइम से ही, स्कूल के टाइम से और कॉलेज के टाइम से गिटार जो अभी भी यहीं पर है, तो गिटार की वजह से ना मुझे बहुत हेल्प होती है अपनी कंपोजिंग करने के लिए. तो जब कभी कभी जैसे सुकून से मैं अकेलेपन में जब बैठी होती हूँ और गिटार बजा रही होती हूँ, तो कुछ ऐसी तारें छिड़ जाती हैं, ऐसे नोट्स बज जाते हैं जिससे कुछ something just gets created there. तो एक मेलोडी बन जाती है अपने आप ही एक गाना बनने लग जाता है. It's like a process which I would call very mystical, magical. तो ऐसे ही होता है कुछ. कई बार आप किसी सिचुएशन से मैं इंस्पायर हो जाती हूँ, और कई बार it's just for music sake. लेकिन
आपका जो अभी रिसेंटली जो गाना है Hmm. द न्यू वन, Yeah. वो एकदम एप्ट है ना, लाइक यू वर सेइंग, yes. ओ या वी आर इन अ कार, वी आर डूइंग अ जर्नी. Absolutely. और व्हाट इज द सॉन्ग अबाउट, वुड यू लाइक टू टेल So अस? the song is called Khushnuma. I don't know why the word just came to me. I'm like, sometimes the words just come to you, you know. I Yeah. don't know from where. हाँ. And it was just about, you know, how I want to live my life on my own terms. I want to travel when I want to travel. I want to just explore myself, explore life, explore the world. And it's a very travel song, metaphorically also, like the journey of life, and also literally. So since I travel a lot because of my shows, so last I was in Princeton and New Jersey and a place called Cranberry, and I found the place very pretty. And you know, before I was going to perform there, I spoke to the organizers and I said, right, if you have a good DOP, can we just shoot my new song? So they said, yeah, why not? So the song is called Khushnuma. So You know, I mean, I see aura, and Yeah. as a coach and mentor, I'm mostly on the mind, body, soul की जर्नी के बारे में. और उसमें एस्ट्रोलॉजी तो आ ही जाती है. कोई भी आप होली बुक खोलोगे ना, उसमें प्लैनेट्स कहाँ चल रहे हैं, कौन से गॉड या कौन से गुरु कब बॉर्न हुए थे, तब प्लैनेट्स कौन से चल रहे थे, ये भी देखा जाता है. ओके, तो प्लैनेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हम पृथ्वी पे हैं, तो इट अफेक्ट्स आवर एनर्जी एंड आवर बॉडी एंड एवरीथिंग. तो व्हेन आई सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम, एक पूरी एक वाइब जो फील आती है ना, वाज अ म्यूजिकल वाइब. एंड आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज यू आर सिटिंग हियर. मेरे साथ जो बैठे थे उनको मैंने तुरंत कहा, बिकॉज आप दूर थे, आई कुड नॉट सी एक्चुअली कौन है. आई सेड हूएवर वो देयर ना, दैट पर्सन इज अ हीलर, म्यूजिक हीलर, और म्यूजिक, यू नो, वो जो रागाज हैं और जो म्यूजिकल धुन है, हाँ. उसकी वाइब्स आ रही थी. सो यू आर एक्चुअली गिफ्टेड, यू आर बॉर्न ऑल्सो विथ इट, एंड देन आपने उसको और नर्चर किया है. सो आई जस्ट लव इट. टेल मी, हाउ डिड इट बिगिन? Thank you so much. And Lara, I just want to tell you that I really believe in astrology. I believe in the occult. I believe in alternative healing a lot, because I just feel that energies play a big, huge role in our life. जी. And I'm really actually thrilled to meet you, and I would love to like go into long discussions about the planetary movements and how they affect our life and all of that. But of course, since we have a paucity of time, I'll talk about my journey first, and then I will someday I'm going to, like, you know, pick your brains on astrology. So well, it began from the beginning, I would say, because I think you know, you're born with it's like a gift from God, हाँ. which is music, and you're just born with it. And apparently when I was a very little baby, even I don't remember, but my parents had taken me for a movie, and वहाँ तो एक वो जो गाना था उस फिल्म का, चंदा ओ चंदा, that is the name of the song. So instead of, you know, like crying or whatever, I came back when they brought me back home, I was humming that song, Tanda oh Tanda, like that, you know. So they were like, oh my gosh, you know, she can sing. So I think my mom really recognized this thing about me, and so she said that, why don't we get you trained classically? So I started classically training from mom. She's a classically trained singer herself. She's done 18 years in Sangeet Praveen. So I was very, very lucky. And also when I was a very little girl, when I was growing up as a little girl, I used to hear and see my mom doing her riyaz, and I used to just go and sit next to her. So somewhere subliminally, it just, you know, the music starts getting absorbed into your system, into your, you know, your everything. जब हम तुम्हारे सुर सुनते हैं, तो आपकी अंदर की आवाज़ भी सुनाई देती है, और ये ना गिफ्ट सबको नहीं होती. सो इन योर डेट ऑफ बर्थ जो 12 है, इट कम्स टू a very powerful number of 3, which is ruled by Jupiter planet, the largest planet in the universe. Okay. Okay. आपका, हम अगर चाइनीज के हिसाब से ईयर ऑफ बर्थ के हिसाब से हम देखें, तो यू आर अ कोआ नंबर. आपका कोआ नंबर 8 है. सो यू हैव अर्दी, वेरी अर्दी एनर्जीज. ठीक है. Yes. एंड योर प्लैनेट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज इन द वैदिक चार्ट, and that is a Saturn, which is also a very earthy planet. Now, earthy people have a tendency also to nurture
आपके आसपास जो भी है आप सबको नर्चर करोगे. आपको चाहिए कि सब खुश रहें, हाँ. है ना, कि मैं कुछ ऐसा करूं कि सब खुश रहें. सो दिस इज अ वेरी नेचुरल ग्रेविटेटिंग थिंग विथ यू. बट इफ वी टेक अ होल नेम टुगेदर, उसके जो वाइब्स हैं, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द कैलकुलेशन, एक नाम का वाइब होता है. वो वाइब में देयर इज म्यूजिक, देयर इज आर्ट, देयर इज सेंसिटिविटी, देयर इज हाइपर सेंसिटिविटी. आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो. Oh my gosh, you are too good. So, guys, I'm meeting Larra for the second time actually, and she has been able to, really assess me 100%. As of now, जब भी जो आपने बोला मेरे बारे में, it's so bang on. I'm highly sensitive, and that's something which actually makes me, it's like a drawback for me. हाँ. मैं इतनी ज्यादा sensitive हूँ that sometimes if the song is a very emotional song, मैं गाते गाते कभी मुझे आंसू आ जाते हैं because I'm that emotional and that sensitive. Yeah. एंड आई लव द फैक्ट दैट आप एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना. Yes. बहुत लोग दे फाइट अबाउट इट, Yeah. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई एम फाइन, यू नो, लाइक दैट. Yeah. बट आई एम हैप्पी और एक्सेप्टिंग इट, क्योंकि हम जब कोई किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे जाने लगती है. वी आर एबल टू चेंज इट. That's सेकेंड चीज है कि आपको थोड़ा सा हर एक चीज आप पर्सनली ले लेते हो कि अच्छा, was it for me, is it for me, is it, so then that can draw you back, like you said ना, वो थोड़ा सा I Yeah. go in, and then you have this beautiful mole on your right Yeah. eye. Okay. Okay, thank you so much that you're calling it beautiful, but many times that people say, अरे तुम्हारे यहाँ पे कुछ लग गया है, what is this, ये क्या है? And sometimes even skin specialists have told me that you want to get removed. I said no, this is my one distinguishing feature. Yes. It's like I'm proud of the mole, actually. And Yeah. your right side of the mole gives you इसकी meaning ये है कि it gives you a lot of luck. Number one, it gives you angelic support. Wow. Okay. Okay. Third is it is a big mole. It is not a very small sized. एक brown dot भी होते हैं, red होते हैं, black हाँ, moles भी होते हैं. और इससे इंडिकेशन ये है कि यू ऑल्सो विल ट्रैवल अ लॉट. आप बहुत चीजें देखेंगे. आप बहुत I have already traveled so much. Oh my gosh. And, Yeah. I can't do without traveling. I think traveling is in my blood. It's in my veins. I need to travel. I have to travel. वंडरफुल. तो एकदम जिप्सी हो. लेकिन Totally tipsy. So somebody call me a wandering minstrel. Like you play the guitar and you play the guitar and perform in different countries. You traveled to different lands. So I'm like, yeah. So you're like a wandering minstrel. So I kind of love that phrase. It kind of defines me. yeah, amazing. Or there is one negative thing about this mole. Oh, gosh. It can nothing bad. Over the years, it can give eye problems. Like it indicates कि a person with the mole under the eyebrows can have on the right hand side of a woman, not for a man, can have मतलब eyesight problems. I already have eyesight issues. I got such a weak eyesight. Oh my gosh. But I mean, I'm wearing lenses right now, so I'm all okay. But when I'm not wearing my lenses and when I don't have my specs, I'm literally half blind. लेकिन उसमें मैंने देखा है कि in yoga, when you do the tratak, Oh gosh. आज ये क्या हो रहा है? Today my yoga teacher in my lesson told me you have to start Tratak from today. So I'm actually going to be starting it in the evening because मुझे लगता है evening में करना चाहिए before sleeping, right? हाँ. Or you're right. however you advise. Superb. नहीं, like your yoga teacher said, आप उसी तरह से करो. But मैंने देखा है कि when I'm traveling, हम फ्लाइट में हैं या गाड़ी में हैं, आराम से ड्राइवर चला रहे हैं, कहीं बैठे हैं, तो आई एक्सरसाइजेस अगर हम करते हैं, that also helps a lot. Yeah. So what you have to do is look on the left for three counts, Okay. look on the right for 3 counts, look up for 3 counts, look down for 3 counts. वैसे है ना, तो आई के जो मसल्स है I'm ना, already वो practicing it. Good fun. I love it. तो the eye muscles become very strong. अच्छा, आप एक बहुत important panel पर भी हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए. You were in Uzbekistan. I know it. I'm just gonna stop at that. Let's see कि हमारे जो viewers हैं उनको पता है कि नहीं. उज़्बेकिस्तान कहाँ है? हमको कमेंट्स में जरूर लिख के बताना. हाँ. और उसके बारे में क्या कोई खास बात अगर आपको पता हो तो मजा आ जाएगा. राइट. तो मुझे तो हमेशा पता लगता रहता है क्योंकि मैं इतना ट्रैवल करती हूँ. मैं इंडियन काउंसिल
फॉर कल्चरल रिलेशंस के साथ इम्पैनल आर्टिस्ट हूँ, तो वो मुझे हर रेगुलरली मुझे भेजते रहते हैं टू रिप्रेजेंट इंडिया as an Indian cultural ambassador also, and also to perform, and we do like a cross cultural exchange of music and performance. तो हमने अभी 32 years कंप्लीट करे हैं ऑफ इंडियन एंड उज़्बेकिस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम गए थे और वहाँ पे परफॉर्मेंसेस थी. मुझे एक बात बताइए, व्हाट वाज योर दिस मोस्ट आहा मोमेंट व्हेन यू मेट योर फैन ऑफ अ बॉलीवुड स्टार और यू मेट समवन स्पेशल? कोई याद आ रहा है ऐसा? ऐसे बहुत सारे वाक़े हुए हैं ऑफ कोर्स. आई थिंक माय बिगेस्ट मोमेंट वाज जब मैंने एक अवार्ड जीता था, सैन फ्रांसिस्को में थी मैं, और आई वन द सहारा संगीत अवार्ड फॉर माय सॉन्ग नज़ाकत, एंड शाहरुख खान इज द वन हु gave away the award to me, and I'm a huge fan of his. Like, I mean, I got the award from him. I did meet him and all of that, but मुझे कभी मौका नहीं मिल पाया to actually sit with him and chat with him or something. But of course उनके हाथों मुझे अवार्ड मिला, and I can never forget that moment because my audience, मतलब वहाँ पे there were 10,000 people in front of me, and I didn't know what, I was just fumbling, and I said thank you so much. This is mind blowing. No, instead of saying mind blowing, I said mind blowing. I said, oh, I was really fumbling, and I'm an English literature student, तो मतलब मैंने, my English is always very impeccable. You know, I try to keep it very flawless and all of that. Like, So but cute. उस दिन तो मैं ऐसा स्टम्बल फंबल स्टैमर कर गई कि बाप रे बाप, क्योंकि I was very, I find him like, okay, SRK for me is a combination of intellect, wit, intelligence, and of course the talent and the looks. He's super. He's absolutely amazing. Okay, so it's nice to have inspiration. It's nice to have that moment of excitement कि अच्छा हम किसी से मिले who's accomplished, who's good for whatever Yeah, that they are. absolutely. लेकिन बहुत सारे singers हैं, and there is a lot that we see on Saregama and other shows, and we see great talent. Some make it, some don't make it. ये सब चलती रहता है. लेकिन आप, what advice would you like to give to budding singers or singers who are established कि सिर्फ बॉलीवुड में गाएं, कि सिर्फ परफॉर्म करें, किस चीज पर फोकस करें? So आजकल जो है दुनिया बिल्कुल डिजिटल एज हो गई है. इट्स द एज ऑफ सोशल मीडिया, और हमारे पास बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं टू शोकेस आवर टैलेंट एंड आवर म्यूजिक. सो देखिए, यूट्यूब इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स. Then there is of course so many audio streaming platforms like Spotify, Gaana, Wink, JioSaavn, all of that. बहुत सारे हो गए हैं. So I think it's हमें किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, बॉलीवुड पे या फिर किसी भी म्यूजिक लेबल पे. आई थिंक टुडे यू कैन बी योर ओन म्यूजिक लेबल. It's got so easy now. Absolutely. शुरू में तो सबके यहाँ लाइन लगाओ, मिलो, या फिर अपने आप को पिच करो. There are so many other things There that are so used to many happen. examples, Lara. I mean, like you take बादशाह's example or even हनी सिंह's example. वो actually अपने आप, उनका खुद का म्यूजिक इतना पॉपुलर हुआ तो जाके बॉलीवुड ने उनको बोला come on, come on over, we want you guys, we want you. अब look at this singer called King. हाल ही में ये जीते थे the rap battle or whatever it was, and he's become a huge star overnight. उनका गाना तू मान मेरी जान and all of those songs जो बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं है. यहाँ तक कि निक जोनस ने भी उनके साथ एक कोलैबोरेशन में वो गाना गाया है दोबारा से, तू मान मेरी जान. सो आई थिंक द स्काई इज द लिमिट if your music is good. You don't need to depend on anything or anybody. So you just focus on your talent, focus on polishing your skill. अपने गाने अच्छे बनाओ, और आपको शूट करने के लिए भी कोई वो मेगा वो नहीं चाहिए कि भाई हमें मॉरिशस जाना है या हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना. You can just shoot a nice cool studio setting. If your song is good, your expressions are good. If you're expressing your song against a white wall also, I think it could be a huge hit. It could get you millions and millions of views depending on how good your song connects with the audience. That is great advice. Thank you. क्योंकि लोग सोचते हैं कि सेटिंग अच्छी होनी चाहिए, हम कहीं और इंटरनेशनल कंट्री में जाएं, फिर बहुत खर्चा करते हैं, then they feel very dejected. Yeah, क्योंकि इतने खर्चे हो जाते हैं उसके बाद डिप्रेशन तो होगी. बहुत कम लोग इतने दिल से एडवाइस दे पाते हैं. दे मीन वेल, लेकिन समझा नहीं पाते. बट द वे यू हैव कम्युनिकेटेड इज ग्रेट. थैंक्स टू योर मर्क्यूरी प्लैनेट विच इज सिटिंग ऑन योर हार्ट एंड योर लिप्स. मर्क्यूरी प्लैनेट, हाँ. वाओ. मैंने भी हाल ही में
हाँ सारेगामा के साथ टाई अप किया है और 25 गाने का रीमेक किया है, जिसमें से ऑलरेडी 13 सॉन्ग्स आर रिलीज। सो प्लीज जाके सारेगामा कारवां पे शिबानी कश्यप टाइप कीजिए और आपको बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनने को मिलेंगे जिनको मैंने रीमेक किया है, जैसे कि सॉन्ग्स लाइक दीवाना हुआ बादल। और आजकल बारिश चल रही है तो ये गाना अभी अभी रिलीज हुआ है, तो जरूर देखना। इट्स अ रिक्रिएशन ऑफ दिस सॉन्ग, बहुत प्यारा गाना ऑफ द यस्टरयर्स। we would love to, so a big shout out to you. And where are the songs? सारेगामा ऑन द सारेगामा चैनल, सारेगामा कारवा। वीडियोस भी हैं, और जिस वीडियोस की तरीके की वीडियोस की मैं आप सबको बात करी थी, ये हमने गाने सारे स्टूडियो बेस्ड ही शूट करे हैं, इन वेरी लाइक जैसे कोक स्टूडियो में शूट होता है, बहुत ही स्टूडियो बेस्ड। ऑफ कोर्स दिस इज फार मोर सिंपलर एज अ सेटअप, बट हमने दिन में कुछ 5-6 गाने शूट करे हैं, तो हमने ताकि जल्दी जल्दी रिलीज भी हो जाए, एंड इट्स फन, इट्स इजी टू डू। You are awesome. You are so gifted. मुझे लगता है हमें और एक बार we'll have to do one more interview with you. जहाँ पर I think next time I'll do an interview with you where I will keep asking you how astrology can guide all of us artists, कि भाई हर एक आर्टिस्ट को एक astrological guide चाहिए, because then people like you can guide us through, you know, आपको ये इस चीज में संभल के चलना है, या इसमें इसको स्ट्रॉन्ग करना है, या इसको स्ट्रेंथन करना है। So yeah, it's really important because we are meeting so many people every day. So a lot of energies are getting mixed up within our energies. Thank you so much. Thanks. So everyone, please watch Drive Through Life with Larra Shah. जरा गौर से सुनोगे तो एहसास करोगे कि हर एक चीज में म्यूजिक है। बारिश की गिरती बूंदों में, आंखों से गिरते आंसुओं में, किसी के शोर में तो किसी की खामोशी में, हर एक धड़कन में, हर एक सांस में म्यूजिक है। अपनी लाइफ को म्यूजिक से भर लो, हीलिंग हो जाएगी। और सुनो, डरना मना है। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड रिमेंबर, शेयरिंग इज केयरिंग। सी यू सून। खुशनुमा